काय होते सांगा. हॅलो. हेलो 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 नहीं बैठिए खड़े बैठिए यार रखिए उसका काम नहीं रुक इसका काम हेलो गुड आफ्टरनून अभी बहुत अच्छा डिलीशियस फूड आप लोगों ने लिया है इसने सोना नहीं वैसे अभी मैं सोच रहा था शुरू करूं कि नहीं करूं नहीं क्या हो गया फूड हो गया फेलिटेशन हो गया मुझे ऑनर भी मिल गया प्रोग्राम फिनिश ओके सो मैं वीडियो प्ले करता हूँ जनरली हार्ट अटैक के पेशेंट में क्या होता है क्या सिम्टम्स होते हैं जो मेन सिम्टम होता है वो क्या होता है यस चेस्ट पेन पर्स्पिरेशन बीपी हाई लो है ना लेकिन सबसे मेन सिम्टम हाँ एसोसिएटेड सिम्टम एसिडिटी एक्चुअली कंफ्यूजिंग सिम्टम है बहुत से लोग एसिडिटी पे चले जाते हैं पेशेंट जो मेन सिम्टम होता है दैट इज डिस्निया है ना ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन तो आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं वही एक साइन होता है जो हम पहचान सकते हैं कि दिस इज द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक राइट यस काय होऊन तरी सांग काय होतं सांगा बर अजून अजून जे होते ते सांगा ना काय होते सांगा यस तो आप लोग ऑब्जर्व करना है कि इसको ब्रेथलेसनेस है डिस्निया है they cannot understand what she is suffering from तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या हो रहा है पेन हो रहा है कि ब्रेथलेसनेस हो रहा है कि मतलब घबराहट हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है काय होतं सांगा ना
और इसे बॉडी में जहां टच करेंगे वहीं पेन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ सिवियर एब्डोमिनल पेन उसे 7 दिन तक एक सर्जन ने एडमिट रखा। जब उसका हार्ट प्रोफाइल हुआ, तो रेको हुआ, ECG निकाले, तब पता चला कि इसको हार्ट है। फिर उन्होंने रेफर किया आगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज सीवियर हार्ट अटैक और पेशेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन वो होने की वजह से वो वहाँ रख नहीं पाए। उन्होंने उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया कि आप वहाँ लेके जाओ। एक्चुअली ही इज हर ब्रदर, और इससे पहले क्या हुआ वो बता रहे थे कि इसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी वजह से वो रो रही है। जो उसने बताया अपन एक्चुअली ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया, और तब मैं पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में रखता था, इंपॉर्टेंट सिटी का हॉस्पिटल था, वहाँ मैं पेशेंट रखता था। मैंने कुछ बेड हायर किए थे, और उससे वहाँ मैंने क्लिनिक में से वहाँ भेजा। तो रास्ते में वापस सीवियरली सिक बसते, और सीवियर अगेन चेस्ट पेन बढ़ गया। वहाँ जाने के बाद बेबी कंप्लीटली ड्रॉप, सिविक अनकॉन्शियस। तो ऐसे कंडीशन में जो हॉस्पिटल वो बोले सर इतना सीवियर पेशेंट हम कैसे दें, क्योंकि फिजिशियन चाहिए। मैंने बोला एक काम करते हैं, आप अभी का 10 मिनट वहाँ रुको, पेशेंट को रखाओ। मैंने किया, उसे जो एक्चुअली मेडिसिन निकली थी मैंने तुरंत ड्रॉप डाला, और एक 10 मिनट उसके पल्सेशंस बीपी थोड़ा सा कवर होने लग गया। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो नहीं तो हो गया। ओके, सो हिस्ट्री देखते हैं। So he stated she was admitted to general surgeon for complaint such as severe abdominal pain, abdominal distension, vomiting, and constipation. Due to no improvement, she consulted cardiac physician who diagnosed the case of CCF with serious complication and hence was referred to the government hospital. The experience and the satisfaction of her brother realized the situation and brought her to my clinic. इसके जो ब्रदर है जो आपने देखा अभी, उनकी मदर कोमा में थी, और उसे मैंने उनके घर पे ट्रीट किया था। कोमा से बाहर निकली, बहुत अच्छी क्योर हुई। उसके बाद वो उसने भी 6-7 साल आराम से जी। तो वो एक्सपीरियंस की वजह से वो लेके आए, क्योंकि जब पेशेंट को एडमिट किया था वो नहीं थे। एक्चुअली ही इज जो बोलते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में बहुत चलता है वारकरी संप्रदाय, नहीं सुना होगा, कीर्तन वगैरह करते हैं। तो वो कीर्तनकार है, वो किसी प्रोग्राम पे थे, तो जब आने के बाद फिर वो लेके आए। So the experience and satisfaction of her brother realized the situation and brought her to my clinic. She is the only lady in her family shouldering complete responsibility of her family, having 2 sons and 1 daughter. She
belongs to a very poor family and remained under economical crisis every time and under stress throughout her married life. Her husband is a patient of schizophrenia. Husband of her daughter expired after 2 years of the marriage. This is the main reason. उसके लड़की की शादी हुई और उस शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हुई, देन उसका रीमैरिज कर दिया गया और रीमैरिज होने के बाद उसे वो प्रेग्नेंट रही और डिलीवरी के लिए वो इसके यहाँ आई और वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लेके गई और जनरल यही होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट देखता है और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन बोल देता है कि इनका आगे का विजन अलग होता है। तो वैसे ही इसके साथ हुआ और ये अकेली लेके गई थी, इसलिए ये बहुत पहले डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि अगर 5 मिनट में सीजर नहीं होता तो बच्चा जाएगा नहीं और मदर जाएगी। और सी terrifically fried. Subsequently, after second marriage, daughter settled well, but recently her daughter was admitted to government hospital for delivery, where after examination she was told about her serious condition of the daughter and was advised for the emergency cesarean operation. Because of such situation, she was shocked and got afraid very much and suddenly perspirated and become quite for a few minutes. ये सुनने के बाद कोई भी जैसे शॉक में जाने के बाद तो वो इम्पैक्ट हम समझ सकते कि कितना होगा, है ना? Observation. My observations. She was very restless, panic, stitching, sore, twist, pain in chest and abdomen, breathlessness, profuse weakness, swelling all over the body. At night, sleepy but cannot sleep, cramps in legs, dryness of throat. Oliguria since 2 days, no urination, constipation, difficulty in speech with hoarseness of voice, whipping. On questioning, she was not able to explain her ailment. She was continuously answering the same thing that she does not know what she is feeling and was crying. BP was 90/50, pulse 120, weak and feeble, heart sound very weak and not clear. So tell me the miasm and lip. क्या माइजम हो सकता है? Yes, psychosyphilitic. Why? Because pericardial effusion is psychosis और वो effusion इतना था कि हार्ट पंपिंग के लिए जगह ही नहीं। That's why she goes into the CCM. So psychosyphilitic. More clear? This is. Tell me rubric. Fast. जरा जल्दी चलते हैं. Element from top. Right. Yes, very nice. But pain is sorry. That is syphilitic. Simple touch से अगर pain हो रहा है और severe pain हो रहा है, is lamenting. That is syphilitic. Yes. Okay. But again, it is a disease symptom. Heart attack और पेन ना कोई मानेगा? Okay. Irritable pain during anguish. Irritable pain during anguish. Yes. So element from shock, mental, element from fright, fear, element from grief, sorrow, care, lifelong उसको सहना पड़ रहा था. Then element from anger, vegetation, anxiety, restlessness, physical, sleepy but cannot sleep,
pain, sore, bluish, internal, or patient, and thirstiness. पर मेरा काम ऐसा है कि जब तक हैनेमन नहीं कहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. हैनेमन क्या कहते हैं? In 176, there are, however, still a few diseases which, after the most careful initial examination, present but one or two severe violent symptoms, while all the others are indistinctly perceptible. And 177, in order to meet most successfully such a case as this, which is of very rare occurrence, we are in the first place to select, guided by these few symptoms, the medicine which is in our judgment is the most homeopathically indicated. तो ऐसे केसेस में टाइम बहुत कम होता है और 1 or 2 symptoms are important symptoms जो हमारे ऑब्जर्वेशन से निकलते हैं. क्योंकि अगर ऐसे केसेस में हमने बहुत टाइम लगा दिया तो पेशेंट हमारे लिए नहीं रुकेगा. सो कंक्लूजन, ये दो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. We should select, guided by these symptoms, the medicine which in our judgment is most homeopathically indicated. Dr. Hahnemann has made it amply clear that it is the just not symptoms, severe violent symptoms, which are going to the base of our prescription. These symptoms or group of symptoms can only guide us to find the simillimum. These symptoms only help us to show us a group of remedies which can come into play. Now we have to use our judgment as to which is homeopathically indicated. This judgment will come from primary knowledge of what is homeopathicity. Homeopathicity include not only similia similibus curative, which literally means symptom similarity, but also something more. And what is that something more? Remedy thus evolve is a representative of one of each of the constituents that man is made up of. Man, as we all know, is a part of universe and is made up of 5 essential elements of the Panchatattva. Yes. So, we all know man is made up of 5 elements. अब ये 5 elements आते कैसे? हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि इंसान मिट्टी से निकलता है और मिट्टी में जाता है ना? लेकिन ये 5 एलिमेंट्स का क्या रोल है हमारी इसमें? So, I go fast. Fire, water, air, earth, ether. Fire gives us thermal, water gives us thirst, air gives us mind, earth, that is the body, physicals, and sky, that means activity. So, this covers man as a whole, so the drug prescribed as a representative of each of the elements and hence works holistically to cure miraculous cures in incurable, advanced and serious cases with minimum effort. इसीलिए हैनीमन ने जो भी जितना भी हमारा मेडिकल जितने भी मेडिसिन है वो ओनली ह्यूमन उनसे हेल्दी ह्यूमन से ही प्रूव करके बनाया है, राइट? सो Similar curative, according to the teaching of Predictive School of Dr. Prafulla, we want a remedy which covers constitution of the patient like mental makeup, physical makeup, general makeup, disease makeup, genetic makeup. These are the genetic traits, and for finding these genetic traits, we should have knowledge of following points: observation, interpretation, perception, and isolation. And these 4 points are very much important in these critical cases, emergency cases. Yes. So, Predictive School of Homeopathy, along with these points, stresses on how to pursue in all the cases the genetic constitution minimum. It is important to understand what rubrics one should take in this year
and it is important for similia, similibus spinatum. So, repertorization, according to my knowledge, miasm is syphilis and psychosis. So, first, सडन हुआ था, जैसे उसने सुना बट से उसे घबराहट हुई, breathlessness हुआ and she fainted. So elements from shock, mental elements from fright, fear. Then elements from grief, sorrow, fear. It is psychotic. It is taken just because of the pericardial effusion, right? क्योंकि ये प्रोसेस स्लोली होती है और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी से पहले से होगा क्योंकि ये फैक्टर उसके लाइफ में स्टार्टिंग से था. So restlessness, physical, syphilis, sleeping sickness, syphilis, pain, sore, bruise, internal syphilis, hot patient and tussle. So these are the rubrics. अब देखो इसमें बहुत सिंपल rubrics है. That aphorism, right? Yes. So remedy, gelsemium and opium, which is the remedy. Opium. Why opium? Happy. I have. No, happy saying. Happy is not covering the sleeping sickness. Only two remedies are covering all this. Opium. Opium. Some लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए थेरापेटिकली कोई नहीं जा रहा. या फिर डर रहे कि मैं जेंसी में बोल दूं तो थेरापेटिकली हो जाएगा. उसका बीपी लो था, पल्स लो थे, हार्ट साउंड लो थे. एक प्रोमिनेंट सिम्टम है जेल्सियन की. उससे अलावा सिम्टम क्या है जेल्सियन? ऑलिगोयूरिया जेल्सियम का सिम्टम है, और जैसे यूरिन पास होती है उसको इतना बेटर फील होता है, रिलीफ हो जाता है. प्रोमिनेंट सिम्टम है, सिफिलिटिक सिम्टम है. देन जितना भी पेन है, it is relieved by exertion, movements. It is also syphilitic symptom of Jensen. Then patient is sleepy but cannot sleep. That is sleeping, sickness, Jensen. Right? Yes. So take the follow. अल्पेक्षा कसं वाटतं त्याचं? काय बरं वाटतं त्याच्यामुळे? अल्पेक्षा कसं वाटतं त्याचं? काय बरं वाटतं त्याच्यामुळे? काय होतं पोटात? पोट फुगलं. बरोबर. कसं आहे ते सांगा. Symptom severity goes, जो prominent syphilitic symptom था, pain all over the body, pain in abdomen. Then और एक बात often लोगों ने observe की, वो इधर खुदा उधर जाए ना, इधर कितने movements थे उसके. Restlessness. It is the symptom of Alzheimer's
मूवमेंट से इसे बेटर फील होता है ना, इसलिए वो कंटिन्यूसली हाथ हिला पैर हिला उसका कंटिन्यूसली चालू था. दुखणं चांगलं घबराट बेचैनी वाटे ते नाही आहे. आज उसने ओरली भी दिया, ब्रेकफास्ट किया, टी दिया, नहीं दो पे दे. नेक्स्ट इज नहीं SBO को 95, 97, 95 was chest pain feels better. Serum creatinine normal, HPT normal, hemoglobin 9.5, TLC normal. इसके पहले मैंने ECG रिपोर्ट नहीं दिखाया ना, टूडी को भी नहीं दिखाया. ESR 82, urine protein 1+, percents in urine 15 to 20. What is this? Percents in urine. What it indicates? Psychosis. Excretion. हाँ, excretion हो रहा है. Percents are not so. न्यूट्रोफिल्स अगर ब्लड में बढ़ते हैं तो that is percent it is psychosis. लेकिन ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? जो प्लूरल पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन था, वो कहां से जाएगा? मतलब excretion start होगा inside out, है ना? Yes, center to periphery, then mild and syphilitic to psychosis. Yes. इसके बाद में she is complaining of fever. Fever, that means sora, है ना? Syphilitic to psychotic to sora. Okay, so now see the pulse. Pleural infusion, pericardial infusion, it is near about 2 centimeters. Then hepatomegaly, it is X-ray chest,
video भी So mild pericardial effusion, good left ventricle systolic function, diastolic function on left ventricle, EV. Even abdomen, hepatomegaly, and 8 10.4, 79 polymarks, 11,000 TLC, and 1.20 creatinine. Yes. Now after 6 days, पोटात आग होती. अजून बसायला मिळतं. अजून अजून काय टेम्परेचर गया नॉर्मल 97 pulse at 97 SpO2, and now she is complaining of burning in abdomen. This is a second layer symptom. Goes to second layer next week. लगी होती किती वेळा थंड 8 वाजता पासून 9 थंड झाली थंड झाली दररोज झाली काय काय खाल्लं सकाळी सुगंध she is complaining mild swelling on leg. Okay, it is position inside to out, above downward, more important to less important. And again, and she is complaining pain in the ribs, back side of. Today, after 6 days, she walk at the morning and no breathlessness, no pain, no perspiration, no dizziness. Okay? Yeah. So, swelling कम हो गया. Now she is asking for me for discharge. कि आज मुझे घर जाना है. And you
can observe the face. पहले का और अभी का, right? Very anguish. Now the face is sorrow scientific. Yes. इसके पहले के वर्ड में उसने बताया गैस्ट्राइटिस. नाउ शी इज कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमेटाइटिस. अगेन मतलब देखो हेरिंग लॉ कितना फॉलो होता है हर केस में, इनसाइड आउट, more important stomach to less important. She is completely showing the symptoms of sura. Now see the report. इसको वीडियो में दिखा नहीं. इसका जो LVEM था वो अगर पूरा वीडियो उसमें है, वो छोटी सी स्क्रीन है, थोड़ा देखेंगे केयरफुली तो मिल जाएगा. पहले था वो 55 to 60. Now it is 65, 60 to 65, and जो पेरिकार्डियल एपिपेरिकार्डियल जो ये था डिफ्यूजन, that was near about 2 centimeter, and now it become 0.5 to 0.8 millimeter. ये रिपोर्टिंग है डॉक्टर वाइचा, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, और ये हॉस्पिटल में एक सरप्राइजिंग बात ये भी कि एक साइड में इनका पेशेंट था हार्ट अटैक का, और एक साइड में मेरा पेशेंट था होम्योपैथी का. वो पेशेंट, ये पेशेंट को डिस्चार्ज हुआ और वो पेशेंट वहीं पे था. ये पेशेंट होम्योपैथी से इतने जल्दी कवर हुआ तो डिस्चार्ज हुआ, वो पेशेंट वहीं पे था और उसे और कॉम्प्लिकेशन पड़ गए थे. दैट पेशेंट गोज इनटू द रीनल फेल्योर. यस. तो मैंने उनसे ही इसका लास्ट वीक को करवाया था कि भाई आप ही देख लो और मुझे रिपोर्ट दे दो. इट इज नाउ नॉर्मल. And now see after 1 month. Stop. Last one. सर्दी लगी, ताप वगैरह. She is complaining of कोराइजा एंड उसकी वजह से थोड़ा सा हेड पेन. आधी दिन आता कसं वाटतं? किती बरं वाटतं? भूक तहान भूक लागते. लगी संडास जाऊ लगी होती. वो लड़के से कह रहे कि आप काम मैं करूंगी, लेकिन लड़का नहीं बोला घर के सब काम मैं करूंगी. ओके, सो दिस वाज द केस. और एक बात जो मैंने जेल्सी में की ऑब्जर्व किया था कि जेल्सी में एक सिम्टम है
डिसयूरिया और ऑलिगोयूरिया, है ना, यूरिन पास ही नहीं होती पेशेंट। और जैसे मैं वहां पहुंचा और इसको जलसीमियम दिया, इसके 10 मिनट बाद इसे नियर अबाउट 1 लीटर यूरिन पास, और जैसे यूरिन पास हो गए उसके सिम्टम ही कम, पूरा हार्ट प्रेशर ही चले गए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि जलसीमियम इतने फास्ट और इतना मतलब ट्रिमेंडस रिलीफ दे सकता है। रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। So, elements from fear, pride, anxiety, depression, emotions, and bad news. Elements from grief, sorrow, anger, rejection, anticipation, lack of courage, timid and apprehensive, sleepy but cannot sleep, desire to be quiet or left alone, aggravation by thinking of elements, irritation by profuse urination, and continued movements. This is the main symptom of this. Okay, hot and restless. See the thing. Okay, next. This is the best case of my life. Brain hemorrhage. तो इसमें हम theoretically थोड़ा सा आगे फास्ट चल जाएंगे. Golden rules of homeopathy. You all know. Aphorism 66. इसका conclusion है, from the smallest homeopathic dose of the medium medicine employed in treatment, the secondary action of the vital force merely shows itself in the restoration of the balance of the health. Such a globules place conclusion. Only one single simple medicine should be given to the patient at one time. Minimum dose. No? Yes. So no repetition. So the case of brain hemorrhage, you can see the dead body. Like right? Dead body you can feel. Okay. She is 92 years old housewife, widow lady, widow. बहुत minutely observe करो. कुछ रिफ्लेक्स दिखा नो मूवमेंट है ना. She is having paraplegia, also hemiplegia, one-sided, and aspiration pneumonia.
See the big hematoma. Brain hemorrhage. It is a left gangliocapsular region 3.4 by 3 by 3 centimeter. Edema and intraventricular extension of the hematoma. Neuroparenchymal atrophy. X-ray hip joint minimally displaced complex fracture is seen involving the right femoral neck and the greater trochanter. So fracture at the right hip, HB8, leukocyte 24,900, neutrophils 83, ESR 102. History of the patient. She was admitted at private hospital since 4th January 2007 to 14th January 2007. Near about 10 days. With the exhibiting symptoms such as unconsciousness, vomiting, right hemiplegia and fracture at the neck of the femur. She was on following drugs. ये सब लिस्ट है. However, due to no response to the treatment given, the patient relatives was advised to take discharge. The relatives of patient desired to see the patient, and at the time of my visit, the patient was more serious as revealed by unconsciousness. आप लोगों ने वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा जैसे पेशेंट को आवाज दिया तो उसने स्लाइटली रिस्पॉन्ड किया था. हाँ, अगेन शी गोज इनटू द डीप स्टेट. Okay. So aspiration pneumonia, it is the more common complication in these patients, comatose patients, right? Most of the patient dies because of aspiration pneumonia. So with respiration by mouth and mild positive response as opening of eyes for very few seconds for forceful attention drawn by sun, which was followed by deep sleep and snoring. She was kept without fan and totally covered with blanket and wear sweater. Her mouth was wide open and tongue was white coated. History given by son. Before 50 years, the son was adopted by the patient, and after about 8 years, her husband died. Hence, she was living with her son without any complication. About her health, however, since last 5 years, due to senility, she is having dimness of vision, impairment of hearing, and intermittent constipation. Nature of the patient: she is very mild, introverted, calm, and quiet lady. Her inclination was towards isolation and was aloneness. She also kept herself away from family matters and never interfered in the family matters. She was having more attention or attraction towards native village, relative and villagers. This is common in old person. उनको अपने native place के लिए बहुत attraction होता है. Complaint: semi unconscious, hematoma,
left side of brain, hemiplegia, right side, fracture right neck femur, rattling of the constipation. Physical generals, chilly, restless, constipated, perspiration profuse, and white coated tongue. Asm, destruction, syphilis layers, 6 layer. Mental makeup, mild introverted, टांगोइड, likes aloneness. बहुत ही सिंपल सिम्टम्स मिले ना, बहुत ही सिंपल, बट ऐसे सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करना कि नहीं करना. Chilly patient, restless, perspiration, constipation, then physical makeup, obesity, old age, hematoma, hemiplegia, tongue white coated, fracture neck femur, right side. Now tell me, अब इसमें से क्या लेना चाहिए? बोलिए. Semi-comatose, hemiplegia, hemorrhage, destruction, right side, chilly patient, restless. This is observation, है ना? कि अगर हम पैथोलॉजी देखते हैं तो ये सिम्टम्स मिलते हैं, ये डिफरेंस मिलते हैं, है ना? डिस्ट्रक्शन है, हेमोरेज है, हेमिप्लेजिया है. But can we prescribe on these rubrics? Homeopathy is an art. There is no hard and fast rule. Now what is to be done? In aphorism 153, take the more striking, singular, uncommon, and peculiar characteristic signs and symptoms, whereas the patient lost his defense. Whereas the patient lost his defense in the syphilitic state. वो कौन सी स्टेट थी जहां उसने डिफेंस खो दिया एंड शी गोज इन कोमा. सर ने बहुत ही अच्छे एडवाइसेस दिए कि कंडीशन अगर हम विकट कंडीशन आती है तो क्या करें. रीड द ऑर्गेनिक, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. सो I consider here unconsciousness, coma, semi-consciousness, conscious means spoken to. जैसे मैंने सॉरी उसके लड़के ने उसे आवाज दिया माँ माँ से 2-3 बार आवाज दिया. इस स्लाइड में आपने देखा होगा वीडियो में थोड़ी आंखें ये हो रही थी ना, तो उसने आंखें खोली ओनली स्लीप, मतलब बहुत ही धीमे आवाज में उसने कहा. Again, she goes into the deep sleep, that is coma. So, this is the rubric for that condition: unconsciousness, coma, semi-consciousness, conscious means spoken to. बहुत ही अच्छा rubric है ये रेपर्टी में, और इतने रेयर सिचुएशन पे है वो. So, answer stupor returns quickly after. Answer stupor, that is dullness, sleepiness, unconsciousness quickly returns after. Respiration rattling, chilly and restless. बराबर है. So the remedy, antiptard and naxomic. बताइए.
नक्सोमी का कैसा होता है, क्या डिस्पोजिशन होती है, एंटी कार्ड की क्या डिस्पोजिशन होता है। मैंने बताया था कि बहुत ही सिंपल नेचर है ना, और नक्सोमी का very irritable, having aorta. So Naxomica allowed an anti-tard 200 was given. Anti-tard Q. If the anti-type was constructed from the list of the symptoms, if the antitype constructed from the list of the symptoms of the most suitable medicine contains those peculiar, uncommon, singular, and distinguishing characteristic symptoms which are to be met with in the disease, to be cured in the greatest number and in the greatest similarity, this medicine is the most appropriate homeopathic specific remedy for this morbid state, the disease, if it be not one of very long standing, will generally be removed and extinguished by the first dose of it. So first dose ने क्या किया? नहीं, videos. See, after 2 days, he said. कसं वाटतं सांगा? After 2 days, she is completely out of coma. Right? Yes. She is trying to stop. See the movement. What is this? Drop increase. This is again good sign. Right? The charges always be good for us. After medicine, discharges बढ़ने चाहिए. अगर वो बढ़ते हैं, it is good sign. Okay? Yes, paralysis also better. Now the reports. Sodium potassium normal. HB 8.5. TLC जो 23,000 था 17,000 पे आ गया. Neutrophils बढ़ गए, that is also good sign. See, coming from syphilitic to sora. Again after 3 days. मैंने पूछा कैसा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा. What is this? अब किस चीज को राइट लेना कि रॉन्ग लेना? Why? Yes. Very nice. Feeling उसकी बढ़ गई. Yes, feeling. That means understanding बढ़ गई. Understanding.
She can understand what I am asking. ना? This is good side. ऐसा अगर पेशेंट ने बोला, आपने पूछा कि कैसा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अरे मेडिसिन मांगोगी, ऐसा नहीं समझना. Take it positively. See, the bed sore is also healing. Yes, now we can see. Such a paralyzed patient, big hematoma, changing में अगर वो बैठ सकता है, it is not a miracle. See the paralyzed hand. After 1 month, I think 1 month. कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लग रहा आगे? क्या ही बड़ा वाटत नहीं, ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा. उठ के बैठ रहे हैं सब. खाना पीना घर पे सब अच्छा चालू है. और यस, तो ये लोगों की आदत होती है. अब मुझे बताइए, जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर था, है ना, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी प्लास्टर, दैट फ्रैक्चर आल्सो healed with a single dose. See her face. It's completely sorrows, है ना. और इसके बाद तो 93 की थी, उसने पूरे 100 कंप्लीट करके गई. क्या कहता है आगे ना? If the antitype constructed from the list of the ये पढ़ा नहीं शायद आपने? Okay. See the changes. Rheumatoid arthritis with heart disease, CAD, SMMS, ASMI, CVD, and PTC. Again, the case of autoimmune disorder. Okay? A male patient named Mr. Khandare, age about 54 years from Yotmal, was brought on 30/10/2008. He
could enter my clinic only with the support of shoulders of his sons, as he could not walk nor stand without support. He was having severe pain in joints. Because of this pain, he was entering in the cabin. He was lamenting, moaning, and anguishing. When he was asked about the complaints, he said, suffering from rheumatoid arthritis since last 3 years, pain in back, legs, and all joints of body, including the joints of vertebra. Joints were swollen and stiff with restricted movements. Fingers get cured, curved daily, having fever at night up to 3 to 4 a.m. and lasting up to 9 p.m. with this joint pain bursts during fever and severe burning in legs and soles. He was having multiple complicated diseases like heart disease such as CAD, coronary artery disease, ASMI, enteroseptal myocardial infarction, CVD, cardiovascular disease, PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty was done. Because of this, he cannot live alone. Yes, this is important in this case. नाइट में ये पेशेंट अकेला रह नहीं सकता था, कंटिन्यूसली इसके पास कोई ना कोई चाहिए था, और इतना पेशेंट ही सताता था, जो भी अटेंडेंट वहां रहता था वो इतना सताता था कि he cannot move, cannot do movements of leg, hand. इवन उसको हाथ उठा के रखना है तो कोई चाहिए था, और हाथ उठा के रखो, बाद में लेना है वापस। इतने सीवियर पेन्स थे और इतना इरिटेबल, एंग्री, अगर सुना में तो जोर से चिल्लाना, कोई भी चीज फेंक के मारना, लाइक दिस, इवन स्पाइकिंग आल्सो। सो because of this, he cannot live alone, fear of death, fear of heart attack, shrieking in sleep, even small noise irritates him or strikes him. He was complaining every demand to be fulfilled immediately. Delay increases his temper. Due to his such behavior, his wife and sons become helpless in spite of well nursing and caring. Due to his basic discontentment, he was always shouting, scolding on his wife, as he always wants his wife near him. When patient was narrating his complaint, his tone was like beating, lengthy, each and every complaint told in detail, like a story, like a singing or rhyming. The complaint was pain in multiple joints with swelling, all joints weakness, complete movement restricted, resting of muscle and profound weakness, sleeplessness, burning pain in legs and soles, continuous fever, daily 3 p.m. to 9 p.m. which increase the intensity of pain in body, restlessness with gabrat, with perspiration, big wound, decubitus at the site of pockets and gluteal region and hip joint. Restlessness worse in night, continue changes position while lying down, impatient, obstinate, discontented, temper tantrum, anger trifles, rage, shrieking or crying with fear of death, with panic attack, fear of death. There was tremendous fear of death. Singing or rhyming during narrating his ailments, personal history, corneal ulcers, spondylosis, dog bite, fecal general, hot patient, thirsty, spicy and sweets, constipated, frequent urination, sleep loss, profuse perspiration. Myasm is syphilis, 7th-layer disease. Now the rubrics. Delirium anxious, anguish. और बताइए, और क्या हो सकते हैं? Lamenting, sleep, clinging, ले सकते हैं, clinging to attendant, cutting the tumbler, yes,
बाइकिंग बाइकिंग का मतलब जो उसकी केयर कर रहा था उन्हीं को हट उन्हीं को हर्ट कर रहा था, राइट। बट मोस्टली उसकी वाइफ ही थी और वाइफ पे हक देना देता ना। हमारी आदत है ना, इसलिए वो नहीं ले सकते। So death, desire, rage, these are your syphilitic rubrics. Fear, panic attacks, these are the rubrics taken here, and the remedies, pain, phosphorus and sulfur. Sulfur. See the first visit. Observe space. Listen carefully. He is saying, showing that सब muscle waste हो रहे हैं, emaciated extremities, muscle तो बिल्कुल नहीं, दांत क्यों हैं? सब हिस्ट्री बता रहे हैं क्या हुआ था। After 1 month, arthritis में क्या होता है मेडिसिन देने का? उधर किया। Each and every case, first dose, symptoms aggravate. वैसे ही सेम यहाँ हुआ, symptoms aggravate. बट आप वीडियो सुनेंगे तो बोलेगा कि पेन बढ़ गया लेकिन मुझे मेंटली अच्छा लग रहा है। See the change in face, expression change हो गई, right? Anguishness था वो चले गया।
कंप्लेंट बता रहे हैं क्या क्या होता था उस मंथ में. So mentally feels better, though he has aggravation of physical symptoms. See the after third month. फर्स्ट मंथ में उसने बताया कि he is feeling mentally better. सेकंड फॉलोअप में उन्होंने बताया कि जो उन्हें कार्डियक सिम्टम थे वो काफी 90% कम हो गए. ओके, he can sleep. अभी वो वाइफ को ज्यादा सताते नहीं है, वो खुद उठते हैं, खुद बैठते हैं, वो सब बता रहे थे. Now in third follow-up, स्वतःहून वाकड उभे राहतात. स्वतःहून उभे राहतात काय. now he can stand by himself. मी सांगितलं होतं तुम्ही स्वतःहून प्रयत्न घ्यायचा. उतरेल ना अजून. He is complaining of swelling on joints, legs. This is also good sign. Circulating out psychosis again. Again, he is telling the same story. He has having a disposition of lamenting. Always एक ही बात लेके बार उसी को रटना. Yes. 3 मंथ तक ये पेशेंट मेरे पास रेगुलर आया, हर मंथ आता था. लेकिन अकोला टू यवतमाळ जो डिस्टेंस है, इट इज नियर अबाउट 3.5 आवर, 3.5 घंटे लगते हैं और सब रोड काफी खराब थे, तो उससे बहुत तकलीफ होती थी. फिर मैंने 6 मंथ की मेडिसिन उसको दे दिया कि 6 मंथ बाद आप आके बताओ. तो आफ्टर 6 मंथ मैं पेशेंट को पहचाना ही नहीं. थैंक यू वेरी मच. वो कह रहा है क्या आपने मेरे को 6 मंथ की दवा दी और आपने बोला था कि अगली बार आप चल के आएंगे, तो मैं आज चल के आया हूँ. म्हणजे ओळखायला नाही होता आले. हो का? अरे वा. सिंधुदुर्ग फिरायला गेलो. वो टूर पे गया था. सिंधुदुर्ग पूरा कोकण घूम के आया, गोवा घूम के आया, समुद्र में नहा के आया बोले. लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं. ओके. आणि कोकण पूर्ण गेलो. अरे वा. बंदर वगैरे पाहणे, समुद्रात फिरलो. अरे वा. गोवा एक ताला अच्छा Now see the change in face. Right? Yes. So this was the case. Autoimmune disorder with multiple heart problems. Okay. Yes.
patient steroid का नाम है steroid का नाम बहुत मैं मेरे पास आने के पहले उन्होंने स्टॉप कर दी क्योंकि कार्डियक फिजिशियन ने उन्होंने मुझको नहीं बोला था इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से तो आप स्टॉप कर दीजिए। यस autoimmune disorder, that is death desire, है ना, wanting the death, killing himself. Limiting sleep को define करें, limiting तो ठीक है, limiting को उसमें था practice में, limiting sleep को sleep during exercise वो नींद में बहुत बड़बड़ा था, रोता था जोर से। Actually that वो उसके वाइफ ने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, बोले रात में कुत्ते कैसे भौंकते हैं, बोले इस तरह का आवाज निकालते हैं, बोले कि like this. This is mourning. Mourning से भी mourning it is psychotic, but lamenting it is syphilitic. Yes. This was the case. This case gives me a big honor. That is winning Ocean Trophy with the hand of Dr. Sahadeo sir. See the cutaneous ganglion. किन लोगों ने देखा है इसको? Yes, दिखाओ कि नहीं दिखाओ? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्ट मूविंग फेटल इलनेसेस दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल सिफिलिटिक डिजीज में अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। ये केस से आपको डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से डॉक्टर से अगर रिजल्ट नहीं मिला वो खो देते पेशेंट, राइट। लेकिन इस केस में मैं आपको फेलियर भी दिखाऊंगा, सक्सेस भी दिखाऊंगा कि अगर फेल होते हैं अपन, रेमेडी रॉन्ग हो जाती है तो क्या करना चाहिए, राइट। तो ये अप्रोच है सिफिलिटिक डिजीज में। फास्ट देखते तो देयर आर 8 स्टेप्स और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है इन सिफिलिटिक केस, फाइंड रूब्रिक ऑफ माइजम एट माइंड बट ओनली सिफिलिटिक रूब्रिक्स। इसके अलावा माइंड में तो लेना ही है, देन फिजिकल जनरल्स में भी जो भी सिफिलिटिक मिलता है ओनली सिफिलिटिक ही लेना है। Emergency cases, yes, we can treat. Failure comes, failure आया तो क्या करना चाहिए, वो हम इस केस से सीखेंगे, ओके। A male patient age 65 years admitted to government hospital was under allopathic treatment since last 7 days. The patient was having cutaneous ganglion on left thigh, ridge, and the lesion was spreading fast. This patient was having history of insect bite, but the exact etiological agent was not known. But the condition of the patient was deteriorating very fast. These allopathic doctors has taken decision of amputation. The patient was shouldering the responsibility of the family, and by hearing his physical disability in such poor economical condition, every member was afraid of such a situation. We could get reference of homeopathic treatment which can avoid surgery. The patient was brought to my clinic by his relatives. The patient was with
very dirty look with foul smell from his body, and the affected area was blackish extending up to the joint with few blisters on posterior region of thigh. There was continuous thin watery pore discharge. A small ulcerative wound was at the site of bite. The patient also had a severe burning, shooting type of pain, which was lightning like and was coming suddenly and disappearing quickly. This led to restlessness, sleeplessness, feeling very hot to the extent that he was removing the wearing and was in need of cold air and demanding for cold water. Appetite was completely lost. गाड़ी चलते के बाद ऑक्सीजन ये पालियों की कोई अच्छा तो dari Baslan आणि सुद्धा सुधान कधी बसलाय So miasm is syphilis, layer is 7th layer. These are the rubrics from his history: blackish discoloration of skin, fast progressive disease, violent effect, thin watery discharge with foul smell, severe burning shooting type of pain, which was lightning light. Pain was coming suddenly and disappearing quickly, restlessness, sleeplessness, dirty look, elements from insect bite, hot patient, thirsty, appetite loss, and left-sided. Repertorization. These rubrics are selected for repertorization: pain, shooting, darting, lightning, quick, violent effect, hot patient, and thirsty. And I got the remedy: Aconite, alumina, arsenic, bela, chamomilla, cuprum, hyoscyamus, nalsomica, sulfur. कौन सी देना चाहिए? Naxomica. Okay. Okay. Your thoughts. Your thoughts. This is comparison of medicine, chamomilla, sulfur. Sulfur 200 was given in single dose. हम गलती कैसे कर बैठते है ना? सल्फर किसमें होना है? गलती कैसे कर बैठते देखो. फॉलो आफ्टर 3 days सल्फर 1 डोज दिया, उसके बाद 3 दिन बाद फॉलो क्या आया? Fever, nausea, and vomiting. Good or bad? Why? Fever, it is good sign. Vomiting, जब तो सीवियर आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो बैड. But
फीवर विथ वोमिटिंग है, इट इज वेल एंड क्योंकि बट फीवर विथ वोमिटिंग है, इट इज वेल एंड क्योंकि हो सकता है फीवर नॉशिया वोमिटिंग स्वेलिंग ऑफ लेग डिक्रीज अगेन गुड साइड है ना साइकोटिक कम हो रहा है राइट सो बैड साइड मेंटल रेस्टलेसनेस इंक्रीज्ड बैड साइड ओके चलो मतलब आप ही सीखने को मिल रहा है He desired to go home with fear of death. Good or bad? देखो स्टार्टिंग कैसे होती है सिफिलिस की अब सिफिलिस माइंड में चला गया है ना पहले बॉडी में था now it goes into the mind so mind goes into syphilitic condition why because he has having fear of death अब उसे डर लग रहा है कि मैं शायद मर गया था so delirium like talking greenish stool again greenish stool good or bad why Loose motions are good, but stool having red, green color, it is bad. Green color, it is psychosis. Red color stool, it is syphilis. But here psychosis is also good, bad side. Why bad? Because only leg वहाँ पे सफर एफेक्ट था उसके बाद ब्रेन एफेक्शन आ गया नाउ इंटेस्टाइन जीआईटी आल्सो मतलब वन बाय वन एक एक सिस्टम इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इंक्रीज ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन जो एरिया था गैंग्रीन का वो उससे डबल हो गया with burning pain feeling weakness thermal change now he becomes chilly this is the most bad sign but thermal change he becomes chilly that means energy completely lost case is completely deteriorated yes see the area of gangrene increased sir my yes here I reanalyze the case and again repertorize with rubrics of restlessness, anxious, violent effect, fear of death, skin discoloration, blackish, stool green, chilly and dusty. Yes. And I got the remedy. Aconite, diffusa, arsenic, carbohydrate, and the patent remedy of gangrene. Yes, वही गलती नहीं की. Arsenic album 200 was given in single dose and see the follow-up. Patient become violent, good or bad. पहले तो only fear of death था, now he become violent and despair. He want to die. Some fear थी, now he wants to die. अब वो चाहता है कि मैं मर जाऊं. इससे छुटकारा पाने का एक ही इलाज है कि मैं मर जाऊं.
That means mind completely goes into the syphilis. So swelling increase, pockets of pus formed below the black skin, area of gangrene increased, covering whole thigh up to knee joint. All blackish part or dead tissue was removed and about 1 to 2 liter vicarious pus was drained from the site. तो जो एरिया ब्लैकिश एरिया बड़ा था, एक्चुअली बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो भी डेड टिश्यू है, जो भी गैंग्रीन में जो भी डेड पार्ट है, वहां से क्रैक आना शुरू कर देता है, बॉडी उसको निकाल के फेंकना चाहती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गैंग्रीन. तो वहां पर भी वैसा ही हुआ. जो ब्लैक पार्ट था उसके बाजू में क्रैक्स आना शुरू हुआ, क्रैक्स में से पस बाहर निकलना शुरू हुआ. जब प्रेस करते थे तो इतना फोर्सफुली पस आता था, tremendous foul smelling, offensive smelling. So area of gangrene increased, covering both thigh. Then blackish part of dead tissue was removed. थोड़ा सा जितना भी easily निकल सकता था वो पूरा निकाल दिया, dead part जहाँ क्रैक आए थे. Then severe offensive odor of pus, pain increased, fever with increased chilliness, patient's general condition was deteriorated, severe weakness, patient was not able to sit, stool bloody, urine red color, extreme desire for vomit. ब्रेन गया. हम बोलते हैं ना, हनीमन ने कहा था कि हमें वो सिम्टम चाहिए जहां पेशेंट ने डिफेंस खो दिया. अब देखो डिफेंस कहां काम कर. ब्रेन, GIT, urinary tract, है ना, kidney. Okay, so पहले green stool थे, now bloody stool. Yes, so kidney also goes into destruction. So multi-system failure, right? फिर भी वो है because of homeopathy. क्योंकि हनीमन ने कहा है डेयर टू बी वाइज, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है ना? यस. सी द रिपोर्ट्स. HP 7.6 नोट कर लो. THC 9200. सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल. ब्रिटेनिया में yes, containing blood urea 89 and 1.95 was retaining. मतलब renal system also involved. Yes. Urine. Okay. Next. अच्छा वीडियो एक नहीं. So what was wrong? Why the well selected medicine failed, and why not your process start? Definitely कुछ क्या wrong हो सकता है? एक ही चीज wrong हो सकती है जिसके लिए हनीमन ने 14 साल लगाए. That is the application of Maya. अब वो कैसे रॉन्ग हुआ? In the first, डॉक्टर हैं पहले देखते हैं हनीमन क्या कहते हैं. In fast growing fetal illnesses or fast progressing fetal destructive diseases, find the cause if any, if recent, if related, but the miasm has bloomed, then cause is not so important. As per footnote 120, consider only syphilitic rubric of mind, physical and general. This is the concept. Jahan failure. Okay. So there are, however, still a few diseases which, after the most careful initial examination, present but one or two severe violent symptoms, while all other are the
instinctively perceptible. So in fast progressive, fatal, destructive diseases, syphilitic diseases, take whatever is available and prescribed. Do not search for constitutional remedy. These diseases where there is one or two severe violent symptoms, while all other are instinctively perceptible. एक सिम्टम यहाँ पे था, आप लोगों ने मार्क किया कि नहीं पता नहीं, लास्ट इसमें क्या था? ये चाय है कि कॉफी है? कॉफी है, yes. That symptom was desire for coffee. और कॉफी कब पीता है इंसान? It is a stimulant. क्यों कब पीता है? क्यों पीता है? जब एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, माइंड ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, एनर्जी चाहिए तो कॉफी लेनी पड़ती है, राइट? इसका मतलब आप सब लोग करते हैं। पेशेंट आल्सो वांट्स कॉफी, और यही मेरे लिए उम्मीद की किरण थी कि he wants stimulant, right? और वो स्टिमुलेंट देखो कैसे निकला है। In first representation, I consider syphilitic rubric giving more importance to generals. First representation में मैंने syphilitic rubric लिए, but I gave importance to only generals, and so the remedy sulfur was partial civillimum and hence helped to stimulate the cure. ऐसे केस में हमें मेडिकल भी चाहिए, right? Then in second representation, because of rethinking given to the syphilitic rubric along with consideration to the psychotic rubric. अब यहाँ पे ऊपर से एक्स्ट्रा गलती हो गई कि उसमें साइकोटिक भी ऐड कर दिया. That was Grimm's tool, right? So that was my big mistake. So even though other remedies such as arsenic selected was found to be wrong, hence did not cure the patient. So we all know the whole organism exists on miasm, details, and survival against any foreign hostile force is by function of immunity. But in this case, the immunity of the patient was completely destructed, and in our homeopathy, we do not cure a disease, we stimulate the immunity or vital force. So, our remedy do not cure disease, we only stimulate the patient, immunity of patient to cure himself. हमें ओनली एक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, उसे परफेक्टली अगर दिखता है तो उसकी इम्यूनिटी उसको क्योर कर देती है, राइट? यस. सो अकॉर्डिंग टू एपोडिज्म नंबर 19 यही हैनीमैन ने कहा है. यस. नाउ so I was in need of strong violent syphilitic rubrics, reaction or disposition of mental, physical and general, where the defense of the patient become well, and rubric selected after that: despair, anger violent, stool bloody, violent effect, discharges vicarious, food coffee desire, chilly thirsty. अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर भी है, मेंटल भी है और जनरल भी है, ओके? और डिसाइड फॉर कॉफी साइकोटिक रूब्रिक, पर ये यहाँ पे लेने की वजह ये थी कि ऐसे सीवियर कंडीशन में जहाँ पेशेंट कंप्लीटली डिटोरेट हो चुका है, उसको उसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं थी, वो बात भी नहीं कर सकता था, इतने सीवियर चिल्स से आते थे, और उस कंडीशन में अगर वो बार-बार कॉफी मांग रहा है पीने के लिए, दिस इज आल्सो सिफिलिटिक रूब्रिक, है ना? यस. सो आई टेक दिस, और आफ्टर दैट आई गॉट द परफेक्ट सिविलिमम, दैट इज द नक्सोमिका. यस. सो आफ्टर नक्सोमिका
अब आप उसे फर्स्ट टाइम देखेंगे आफ्टर द डिसेक्शन, है ना। उसका जितना भी पार्ट था वो निकाल दिया था। संडास के शुरू में see the part weakness बास्केट में कम है एकदम dressing with normal saline, no any betadine alcohol, कुछ नहीं, NS इतने सारे मसल्स टेंडन्स उसमें चले गए, ओके। और कैसे मसल्स और टेंडन का रीगेन होता है आफ्टर 15 days। How miraculously the healing starts। कितना बढ़िया देख रहे हैं ना। See the red pinkish color, it is the sign of well fibrosis, fibrotic changes। Healing start with fibrosis according to the modern science। कहीं पस नहीं, कुछ नहीं, no discharge, well granulation of new tissues। yes। और हमेशा कोई भी वुंड जब हील होती है तो वो पिंकिश रेड दिखनी चाहिए। yes। next। yes। now the area of wound become contracted, therefore healing start with at the corners of wound। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि एक केस बहुत फेमस हुई थी तब, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैंने इसे रखा था तो वहाँ पे जनरल सर्जन ड्यूटी पे थे और उन्होंने मुझे कहा कि सर बोले हीलिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो पार्ट है बोले जो ग्रैन्युलेशन वहाँ हो रहा है वो एक्सेस ग्रैन्युलेशन हो रहा है, वो कॉर्नर के ऊपर नहीं आना चाहिए। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उनके उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर आता है तो वो क्लोज कैसे होंगे, इसलिए बोले इसको छाटना पड़ेगा।
इसको और निकालना पड़ेगा। मैंने बोला सर वो भी करने की जरूरत नहीं, अगर इतने बड़े वुड में ग्रैन्युलेशन हो रहा है, दिस इज द गुड साइन फॉर मी, तो निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कॉर्नर उसके जुड़ जाएंगे, राइट। तो वैसा ही किया और देखो नाउ ही कैन वॉक। हर कॉलम में आपको एरिया कम होते हुए दिखेगा। अभी देखिए वो और नीचे दब गया, जितना भी ऊपर पार्ट था वो वापस नीचे चले गया। देखो ऊन कितनी रहेगी। जनरली ऐसे ऊन में क्या करते हैं सर्जन, ग्राफ्टिंग, है ना, यस। और यहाँ पे देखो आपको स्कार भी नहीं मिलेगा। ओनली नॉर्मल से नहीं, और थोड़ा कोकोनट ऑयल ड्रॉप डालते थे, वो बैंडेज चिपकने को नहीं, ना पॉजिटिव चिपकने को नहीं। नो नो कुछ नहीं। सी द स्कार, मिनिमम स्कार, जैसे इतना पार्ट बाकी क्लोज। Yes, only 1 inch. Yes. Yes, see the healing. And the last follow. This also changed. Yes, natural healing with the function of all muscles. जो गए थे वो भी आ गए। So what Robbins pathology says, healing takes place by fibrosis, stages, granulation, homeopathy. In this case, listen carefully. In this case, repair or cure started according to Herring's law of cure as a repair process initiated from excretory kidney. सबसे पहले उसका creatinine, blood urea normal हुआ, then digestive system stool normal way, which were totally gone into destruction. There is a significant increase in hemoglobin from 7.60 to 11.50 within 6 days. It is totally impossible. आप कितने भी हाई टॉनिक लो, कुछ भी करो, इंजेक्शन लो, कुछ भी, it's not possible. But with homeopathy, it is possible. Yes. So
within 6 days, which is normally not possible. It usually increased by a gram every week. In this case, fibrosis was minimal with very good skin cover obtained. The truth of homeopathic wonder can be compared by the fact that there is a great difference in the healing process. Routinely, healing of such large raw wounds takes place by large area covered by fibrosis or need skin grafting. Throughout the healing period, considering such big raw area, there was no evidence of infection or pus discharge during entire period. There is a good melanin pigmentation tends to normal skin color is seen reaching up to the healing age of the wound. There is no evidence of any contraction of soft tissue, and movements of the limbs were absolutely normal, and it was not restricted, which is a possibility which is seen in modern science or modern line of treatment. That's why Dr. Prabhu Videkar sir says homeopathy is mathematics, और जिसको mathematics जम गए है ना, आप कहीं पे भी जाओ अगर mathematics आता है तो you can never be failure. So Dr. Boger says things become simpler as one approaches perfection. So, Preface of Organon of Medicine, 6th edition, Dr. Hahnemann writes, homeopathy is a perfectly simple system of medicine, remaining always fixed in its principle as in its practice, which, like the doctrine whereon it is based, if rightly applied, will be found to be complete and therefore serviceable. What is clearly pure in doctrine and practice should be self-evident, and all backward sliding to the pernicious routinism of the old school that is as much its antithesis as night is today should cease to war itself with the honorable name of homeopathy. Next one. सर एक क्वेश्चन है, इसमें जैसे फर्स्ट डोज ऑफ हमने सल्फर एडमिनिस्टर किए, उस समय नक्स दे सकते थे कि बात के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नक्स है बात उस समय है ना, जब तक सिमिलैरिटी नहीं होती तब तक कोई चेंज नहीं आता कैसे भी रेमेडी, लेकिन जब सिम्टम सिमिलर और सिमिलैरिटी आप देखेंगे तभी रिजल्ट आएगा, तभी एग्जैक्ट स्टिमुलेशन मिलेगा। फर्स्ट पोटेंशियल है फिर नक्स का और सल्फर का सेम मार्क्स, हां नक्स और सल्फर था, लेकिन ही वाज हॉट दैट टाइम, सो इसलिए सल्फर 5:30 हुए। वन केस मेरी तरफ से दिखाता हूँ लास्ट। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो आप लोगों ने एक केस देखी, इस केस के लिए सर को डॉक्टर विजय का कॉम्पिटिशन रखवाया था, इसमें इनको अवार्ड मिला था, थर्ड प्राइज मिला था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत मतलब क्लैपिंग करें। शुरू करने का मौका काफी लोग ने पार्टिसिपेट किया था। देखो केसेस तो बहुत है, इंसिलुमा है, आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सेलुलाइटिस, लेप्रोसी विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोल्ड एब्सेस है, हेमेंजियोमा है, एक्यूट नेफ्रोटिक पैनक्रेटाइटिस है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, एक्यूट आई इंजरी है, एक्यूट रीनल फेलियर है। नीचे कुछ केसेस को ना बिफोर एंड आफ्टर दिखा दिया, इस समय अपने पास कितना समय है आपके पास? आधा घंटे में एक केस होगी।
एक केस कर लेता हूँ। 50 केसेस का एक साथ वो एक्चुअली बिफोर आफ्टर में होता क्या है, मेरा अभी वर्धा में सेमिनार हुआ, वहाँ पे उनका स्पेशल यही था कि भाई हमें आफ्टर बिफोर दिखाओ। मैं उस टाइप से प्रेजेंटेशन बना के गया और आफ्टर बिफोर कैसे दिखाने लग गया। तो डॉक्टर्स की डिमांड है कि सर इसमें कुछ नहीं समझ रहा है, खाली वीडियो में देख रहा है, ये समझ रहा है कि भाई अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कैसे दिए, क्यों दिए, क्या दिए, क्या सिम्टम थे, क्या हिस्ट्री थी, कुछ पता नहीं। इसमें इतना पूरा करने के लिए समय बहुत चाहिए। हाँ, और मतलब मोटिवेशन के लिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग बिकॉज़ सर चलो ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या रिनल फेलियर वाला है सर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम या रिनल फेलियर, रिनल फेलियर, डीएमडी। डीएमडी बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। दोनों ओके, सो एक्यूट रिनल फेलियर जो एक्यूट इमरजेंसी होती है, और ये पेशेंट एक सर्जन के पास मेरे पास आया। उसका पाइलोरिक स्टीनोसिस का ऑपरेशन हमारे अकोला के रिनाउंड सर्जन, उनके यहाँ उसका पाइलोरिक स्टीनोसिस का ऑपरेशन हुआ। वो 7-8 दिन एडमिट था, उसको हायर एंटीबायोटिक दिए गए, उसमें उसकी किडनी चली, तो एक्यूट रिनल फेलियर डायग्नोस हुआ और उसे नागपुर इमरजेंसी शिफ्ट करने का उन्होंने बताया कि भाई आप इसका डायलिसिस करना पड़ेगा। अकोला में जब एक्यूट में कोई डायलिसिस नहीं करते थे, इसलिए उनको अभी तो 2-4 सेंटर हो गए, पहले कुछ नहीं था, तो उसे पेशेंट को नागपुर रेफर किए। He was student of वेटरनरी, जो हमारे यहाँ वेटरनरी कॉलेज है उसमें वो पीएचडी कर रहा था, स्टूडेंट था पीएचडी का, जो वाज वेटरनरी डॉक्टर, और उसके फादर वहाँ पे डीन थे, उसी पेशेंट के फादर वो वेटरनरी कॉलेज में डीन थे। तो ये पेशेंट था और उन्होंने पेशेंट को नागपुर लेके जाने के लिए निकाला, और उनकी एक कलीग थे उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि भाई अब अपन जा ही तो रहे हैं ना, तो जाते जाते एक बार होम्योपैथी को दिखाते हैं। तो जिन्होंने मेरे पास भेजा, उनकी लड़की भी रिनल फेलियर में गई थी, उससे भी मैंने निकाला था, इसलिए उन्होंने बोला कि एक बार मेरे कहने पे आप चलो, आपका पेशेंट ओके हो जाएगा। फिर वो लेके आए और उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 2 बजे तक हम 2 घंटे आपको देते, 2 घंटे में मेरे बेटे को यूरिन पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम यहाँ से लेके जाएंगे। मतलब 2 घंटे सर बहुत ज्यादा होते हैं, 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, आप खाली पेशेंट को लेके आओ। तो उन्होंने पेशेंट लाया, मैं आपको दिखाता हूँ। A 23 years old male, student of BBSc, SC, and AH, video. Suddenly, I started pain at renal angle.
and the unique experience is being covered practically. As well as the special diagnosis between total and 24 hours before he was passed urine, like that red urine, yes, और उसके बाद फिर यूरिन स्टॉप हो गई, क्लोज। So you complained pain in abdomen at renal angle since 2 days, type of pain, coughing and pulsating, anuria since last 48 hours, dullness. Physical, general, outpatient, changeable, first changeable, desire lemonades. History. The patient was operated before 8 days for pyloric stenosis at private hospital. He was administered with multiple drugs and higher antibiotics. Up to 6 days he has no complaint, but suddenly he felt pain at the renal angle, and after that he passed bloody urine and then urination was stopped. He is mild, calm, quiet in nature, very cooperative, compromising personality, and sympathetic about poor people and animals. Likes company and gossiping with friends. VHG report was right kidney shows non-obstructive hydronephrosis with signs of acute medicorenal disease. So from acute diet, कौन यूज करता है एक्यूट चेक? दिखाओ एक्यूट चेक। यस, तो क्या एक्टिविटी थी पेशेंट की? एक्चुअली एक्यूट चार्ट में हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी डल है, इंक्रीज है, रेस्टलेसनेस है, या फिर मेंटल एक्टिविटी डल है, एक इंक्रीज। तो इसकी क्या थी? He was dull, मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज नहीं थी, या फिर वहां पे उसे कोई रेस्टलेसनेस नहीं था, ना एंगर। सो फिजिकली he was dull, hot and thirstness. So अगर हम जाते हैं activity, dull, hot and thirstness, there are 9 to 10 remedies. Okay, और इसमें से ही एक रेमेडी है। तो यही चीज हम देखते हैं रेपर्टाइजेशन से, शायद है आगे। तो rubrics for repertorization, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑपरेशन हुआ है, आफ्टर लॉट ऑफ मेडिकेशन हुआ है, तो यस, abuse of medicament, pain appears suddenly, food eliminate desire, hot patient. So suddenly appear हुआ, इसलिए pain appear suddenly, very simple. लेकिन जो बर्डन था, रिस्ट्रिक्शन थे, अदर केस 2 घंटे में होना चाहिए, है ना? केस वाज वेरी सिंपल, उस केस में कुछ नहीं था। ओके, so after 2 hours, तो पहले बोला था कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने जैसे उसे डोज दिया, 15 मिनट में उसने 10 ड्रॉप्स यूरिन पास किया, फिर उनकी होप जाग गई, होना है सर 10 ड्रॉप्स आ गए, वेरी गुड, फिर और एक डोज दे दो, ऐसे था। एक्चुअली मैं लैक्टोज पाउडर यूज करता हूँ,
तो मैं सैचेट्स देता हूँ। तो बस सैचेट होता है मेडिसिन का, बाकी सैचेट्स होते हैं एसएल के। तो मैंने उनको बोला कि अभी एक काम करो, अभी और यूरिन आने चाहिए ना, तो एक गिलास पानी लो, उसमें एक पूरी की पाउडर डाल दो, उसको पूरा अच्छा वन डायरेक्शन में, और उसको 5-5 मिनट में एक चम्मच पिला दो। जैसे पिलाएंगे वैसे यूरिन पास करते जाएगा। उन्होंने वैसे किया। देखो फेथ बहुत बड़ी चीज होती है ना, पॉजिटिविटी क्रिएट करती है अराउंड द पेशेंट। सो उन्होंने वही थिंकिंग से वो किया, और 2 घंटे बाद उसे नियर अबाउट 500 ml यूरिन पास हो गया। यस, सो फर्स्ट सेकंड दोन दिल्यानंतर तुला किती वेळा लागेल सेन्सेशन झालं किंवा लागलं? एक घुट अच्छा, एक घुट नहीं छोटा म्हणजे 10 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स आणि किती वेळा लागेल? म्हणजे पहिलं सवाल see the 2 bottles urine किती वाजतापासून केली? 12 3 ते and urine bag also contain. So 12 बजे डोज दिया, तो मैं रात को 8 बजे उसे देखने गया, तो 8 बजे तक उसने इतनी यूरिन पास किया, 500 ml, देन हाफ, और यूरिन बैग में जो 500 थी, मतलब नियर अबाउट 1250। यस, हाँ, 2 ही। So, abuse of medicament, pain general appears suddenly, food, drinks, limonade, nitric acid, pulsatilla, and arsenic alcohol. So you are hot first day, so medicine is clear, pulsatilla. Okay. So thank you very much. So क्या क्या सीखने को मिला बताइए, और आपने क्या क्या लिया इसमें से? कुछ नया मिला क्या कि वही पुराना? बहुत सारी चीजें सर, उसमें नाइट्रिक एसिड था। हाँ, पल्सेटिला ही था। Pulsatilla is hot and fast. Nitric acid is cheap. And nitric acid thirsty also. And again, one thing is important here. Nitric acid is very much irritable. Pulsatilla is mild. उसका nature आपने देखा है ना? It's very affectionate, mild, loving, animal loving. So हर चीज साइंटिफिकली समझ में है ना, ये ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन जैसा एलिमेंट ने कहा वैसा ही परफेक्टली वैसा ही फॉलो किया। ओके, सो किस किस को आज केसेस अच्छे लगे? सभी को। तो फिर से आना है। ओके, सो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन था, ये लाइव था यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे भी इसे देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है होम्यो गुरु डॉक्टर वानखेड़े, और इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं क्लासेस लेता हूँ, उसके भी वीडियोस हैं। एक 1 ईयर बैक मैंने कोर्स चालू किया था, कॉन्फ्लिक्ट स्टडी वर्कशॉप, 2 डेली होता है, 365 डेज का वो कोर्स है। वो कंप्लीटली बेस्ड है टीचिंग्स ऑफ डॉक्टर सर, जो सर ने एससीपीएच और एससीपीएच पढ़ाया उसके बेस पे ही वो है, और सर का ही है जो पढ़ाया है वही मैं बता रहा हूँ। और उसमें डे टू डे पूरे 365 डेज की उसमें वीडियोस है। अभी कुछ दिन बाकी है 1 ईयर में, और हमारी वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट पे ही सब कोर्स कंप्लीटली आ जाएगा, 365 डेज कोर्स। ओके, तो आप वेबसाइट पे भी, अभी वो लॉन्च करने का बाकी है, वो लॉन्च हो जाएगा कुछ दिन में, उसका वर्क शुरू है। उसके बाद आप लाइव यूट्यूब पे भी क्लासेस डेली 4 to 5 होते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको आज का मेरा सेमिनार, मेरे केसेस अगर सही में से अच्छे लगे होंगे तो अपना अपना मोबाइल निकालिए, उसके टॉर्च ऑन कीजिए। यस, सब लोग जलाइए। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी आपको YouTube में जाना है, थैंक यू, YouTube में जाना है, YouTube ऑन कीजिए जी, YouTube ऑन करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग अगर सही में मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो आप लोग सही में इसे सब्सक्राइब करेंगे, इवन बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि आगे का जो भी हमारा कोई इवेंट्स होता है या फिर कोई भी होता है उसका अपडेट आपको मिलेगा। Okay, so thank you very much. I am really thankful to जो आपका संजीवनी आरोग्य वाहिनी है, then my friend लक्ष्मण सर, उनकी टीम, ये जो होम्यो हॉल, होम्यो हॉल, आप सबका मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना साइलेंटली मुझे सुना, मुझे यहाँ आने का चांस दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंकफुल बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा थोड़ा सा अनुरोध का इतना ध्यान रखा, और अपने हमारी छोटी सी अनुरोध तो हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आप इतना दूर से हमारे बीच में आकर के इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिए हैं। ये हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यादगार हो गया है, और हमको इतना अच्छा मोटिवेशन मिला है कि आगे हम सब मिलकर के इस तरह की केसेस में और अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करते के साथ में हम लोग मिलजुल करके इसमें और भी लोगों को सेवा देंगे।
इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की ये खासियत है कि ये साइंटिफिक से बेस्ड होती है और साथ में स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते हुए आपको बताती है, एक एक चीज सिखाती है, ऐसा सिखाती है कि आपको अगला पिछला सब कुछ व्यक्ति का पता चल जाता है। इवन उसका भविष्य, कैसे उसकी मौत होगी, कैसे उसके जीवन के दिन बढ़ेंगे, ये भी हमको पता चलता है। इवन इतना भी मालूम चलता है कि किसी लाइफ में वो कैसा था, वो उसके साथ क्या घटनाएं घटी होगी, हमारा इतना अध्ययन हो जाता है कि हम उसकी इतना अगला और पिछला डाटा हम बना सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो इतनी छोटी सी पिल से भी हम इतने बड़े काम कर सकते हैं। और ये हम लोग के साथ में और मगर सब होना चाहिए, इसलिए हमको अध्ययन करना है ना। तो आइए हम सब मिलकर के धन्यवाद दें। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम बीच में हैं। थैंक यू डॉक्टर सहदेव वानखेड़े जी। जैसे सर ने कहा कि हमें सब कुछ पता होता है, चिंता है इसका, ये लाइफ अगली लाइफ का, तो इस पे मैं 2 वर्ड कहूंगा कि बहुत से पेशेंट होते हैं जो हम ठीक तो करते हैं, अच्छे भी होते हैं, और कुछ अपनी गलती बोलो या फिर उनकी गलती बोलो या फिर उनकी डेस्टिनी बोलो, उससे वो केस चली जाती है। तो ऐसे मेरे साथ, मेरे केसेस के साथ बहुत हुआ कि बहुत सारे पेशेंट मैंने अच्छे किए, घर पे गया और घर पे जाने के बाद डेथ हो गई। तो बहुत सारे पेशेंट है। एक सिंपल केस बताता हूँ। कोमा का केस था, जो आईसीयू में एडमिट था, और वो पेशेंट नियर अबाउट 1 मंथ कोमा में था, और बाद में एमडी ने बोल दिया कि इसे लेके जाओ। वो मेरे फ्रेंड का फादर इन लॉ का, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है यार, क्या करें। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने पेशेंट को देखा, पेशेंट मेडिसिन दिया, उसकी मंथ्स मेडिसिन आई, मंथ्स देने के बाद पेशेंट कंप्लीटली ओके हुआ। ओके होने के बाद मतलब कोमा से बाहर आया, तो 1 मंथ से कोमा में था। मेरे फादर है तो नहीं बोल सकते, मैंने बोला ओके चलो घर पे आ जाऊंगा। घर पे जाने के बाद 3-4 दिन पेशेंट घर पे रहा। पेशेंट का लड़का मेरे पास आया, सर बोले इनको हम वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना है। क्या होगा? तो नहीं बोले, वो कैसा रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि भाई इसकी तबीयत खराब है और घर पे लेके आए, तो इनको ट्रीटमेंट करना नहीं है, पेशेंट को मारना है, पैसे भी देख रहे हैं, इसलिए बोले खाली नाम के लिए हॉस्पिटल में रखना है। मैंने बोला लेके आओ। मैंने हॉस्पिटल में रखा उसे, और पेशेंट 4-5 दिन भूखे रहा, मतलब भूखे था, घूमता था, सब पैरालिसिस पर क्योर हो गया, खाना पीना स्टार्ट हुआ। और एक दिन रात में पेशेंट के, मैं लाइव बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, पेशेंट के लड़के ने उसे फूड में पॉइजन दे दिया। That's why I told your destiny cannot be served. ये हमारे गीता में भी, भगवत गीता में पार्ट 1 चैप्टर 1 to 9 में लॉर्ड कृष्णा ने कहा है, explain the supreme knowledge and royal secret of the eternal nature of the soul and the cycle of birth and death. He explains the concept of divine knowledge and the path of spiritual enlightenment. ये हमारे हाथ में होता है कि वो होम्योपैथी से अच्छा हुआ, घर पे गया, पूरा ओके हुआ, और उसके बाद उसको मरना ही था। तो किस तरह से मौत आई? एक केस में आगे दिखाने वाला था, की केस है। वो एक संत थे, उनको हिमैंजियोमा हुआ, इसकी वजह से होल बॉडी पैरालिसिस हुआ। वो पेशेंट 1 महीना पुणे में रहा, सर्जरी हुई, लेकिन पैरालिसिस की वजह हुआ, हिमैंजियोमा वापस रीअपियर हुआ। उसकी वजह से बेड पे रहने की वजह से उसको सीवियर, मतलब इसने डीप बेड सोर्स हुए। उसके बाद उन्होंने पुणे से घर पे भेज दिया।
पेशेंट मेरे यहाँ 1 ईयर तक एडमिट था कंप्लीट। उसका बेड सोर कंप्लीटली ओके हुआ। आप वो बेड सोर देखेंगे तो उसमें से नियर अबाउट मैंने 10 to 15 बैंडेज निकाले। इतनी बड़ी डीप वुंड थी जो हेड ऑफ फीमर कंप्लीटली दिख रहा था। वो पेशेंट कंप्लीटली ओके हुआ, चलने लग गया और बाद में मैंने उनको डिस्चार्ज किया क्योंकि 1 साल से वो मेरे यहाँ था और उनका भी कहना था कि मैं एक बार घर पे जाता हूँ 8 दिन रहता हूँ वापस आता हूँ। मैंने बोला ओके, इतने दिन से और वो फेमस वो एरिया में थे, उनके इतने सारे फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स ने भी मेरे यहाँ रखा था और वही लोग पेड कर रहे थे। वो पेशेंट घर पे गया, घर पे उनको 8 दिन बाद सिंपल 2 लूज मोशंस हुए और पेशेंट की डेथ। This is called your destiny cannot be solved. Again monthly हमारे सर विजयकर सर जिन्होंने इतने सारे पेशेंट क्योर किए, इवन ऐसे डिजीज क्योर किए जिसके लिए कोई इलाज नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इतने उनकी एज नहीं थी, वो हमें और चाहिए थे 20 साल तक, इतने अर्ली एज में हो गए है ना। उनके पास क्या नहीं था, हर टाइप की नॉलेज थी, हर डिजीज को क्योर करने की पावर थी, फिर भी गए बिकॉज ऑफ बताना चाहूंगा। सर जाने के बाद मेरा 7 साल का बहुत ही प्यारा सा हैंडसम बहुत ही इंटेलिजेंट मेरा लड़का, सर जाने के बाद बराबर सर दिसंबर में गए 18 तारीख को और 20 दिसंबर को मैंने लड़की की। उसकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की, सर के पास लेके जाते थे, सर बोलते थे हमेशा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ओके। और एक दिन मतलब कोरोना के इसमें से भी वो निकल गया, कोरोना हुआ उसको, कोरोना से एकदम ओके हो गया, फाइन पूरा निकल गया। उसके बाद 6 महीने बाद सिंपल asthmatic attack आया, that attack was reversibility, that was status asthmaticus, और उसमें सडन कोलैप्स हुआ, एयर ट्यूब कंप्लीटली ब्लॉक हो गई और सडन डेथ हो गई। दिस इज बिकॉज ऑफ, अब क्या नहीं था, सब कुछ तो था। 15 दिन पहले ही सर से दिखा के लाया और सर ने बोला ओके, हम एक डेस्टिनेशन पे गए, वहां पे बहुत एंजॉय भी किया, स्विमिंग किया और उसके बाद तो ये है कि हम तो अच्छा करेंगे, अच्छा होगा भी, लेकिन अगर उसकी नसीब में नहीं है तो वहां हम नहीं कुछ कर सकते। नसीब कोई छीन नहीं सकता। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हेलो चेक हेलो चलिए, वैसे मेरी आवाज अच्छी है, वैसे मेरी आवाज बुलंद है। थैंक यू सर। वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी लक्ष्मण जी ने मुझे दी है और सही आप ही को दी है। वो इसलिए कि वोट ऑफ थैंक्स तो मैंने कई बार कई सेमिनार में धन्यवाद सबका अदा किया, शुक्रिया अदा किया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व का, समझ रहे हैं, पहली बार मुझे मौका मिला है कि ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व का मैं वोट ऑफ थैंक्स और थैंक यू कहना चाह रहा हूं तहे दिल से, हृदय से। क्यों? इसके पीछे कारण है, आज
एक ऐसे स्पीकर को हमने सुना है, एक ऐसे स्पीकर को सुना है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको होम्योपैथ, एक क्लासिकल होम्योपैथ बनना है या प्रेडिक्टिव होम्योपैथ बनना है, तो विजय का सर हमेशा कहते थे कि आप सोलिक होम्योपैथ, सोलिक तरीके से या साइकोटिक तरीके से आप होम्योपैथ बनने की कोशिश मत कीजिए। जब तक आपके अंदर सिफिलिटिक ना हो, सिफिलिटिक केसेस डील करने की आपकी क्षमता ना हो, तब तक आप भूल जाइए कि आप अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं। ये जितने भी केसेस हम देख रहे हैं सबके सब लगभग साइकोसिफिलिटिक, सिफिलिटिक सबके सब होते हैं। अगर आप सिफिलिटिक केस करना, ठीक करना आपने सीख लिया, आप बेस्ट होम्योपैथ बन गए। और उसके लिए आपको खुद को भी सिफिलिटिक बनना पड़ेगा। आप सोलिक बनकर रहेंगे कि मैं खाली 10 बजे जाऊं, 2 बजे आ जाऊं, उसके बाद आराम से घर जाके सो जाऊं, तो इस तरह आप अच्छे होम्योपैथ नहीं बन सकते। कभी कभी सोनी जी की तरह, और सोनी जी सुन लीजिए, आपकी तारीफ के बोल रहा हूं कि रात में आप 12 बजे तक जो जगते रहते हैं आपकी क्लिनिक में, इसकी वजह से आप 3 बजे तक भी, अरे वाह, तालियां हो सोनी जी के लिए। और वाकई शुरू में इन्होंने जो नाम सवाल और दूसरे भी जो इस तरह काम कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसलिए आपको सिफिलिटिक बनना ही पड़ेगा, आपके नेचर को आना पड़ेगा। और आज ऐसे व्यक्ति तो, क्योंकि नंबर 1 विजय का सर के खास उनसे आशीर्वाद मिला है। नंबर 2, एक ऐसा होम्योपैथ हमारे बीच में जो आईपीडी से जुड़ा हो। आईपीडी से जुड़े कितने हमने होम्योपैथ को सुन लिया, बताइए। जो आईपीडी में इतना टाइम दे रहे हैं, और आईपीडी में अगर टाइम दे रहा है, इसका मतलब है कि आप ऐसे होम्योपैथ से मिल रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ओपीडी में बैठ के आराम से एसी में बैठ के तो करने वाले बहुत है, लेकिन आईपीडी में पसीना बहाने वाले व्यक्ति और ऐसे होम्योपैथ बहुत कम मिलेंगे। और तीसरा, जिसने अपना खोया हो, जिसने अपना खोया हो, बाकी वो कितने हद तक दूसरों को बचाना जान सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्तित्व से हम चाहते हैं कि ये बार बार आए और एक से एक केसेस और भी हमको देखने को मिले, सुनने को मिले और सीखने को मिले। आज तो ऐसा लगता है कि जैसे आप सुपरफास्ट ट्रेन से आए, अभी सुपरफास्ट ट्रेन आ ही रही है और आपने इसको बड़ा सुपरफास्ट आपने कर दिया, तो थोड़े जो नए जो जूनियर्स हैं उनको थोड़ी तकलीफ हुई है मेरे ख्याल से, वो ज्यादा उसको ग्रास्प नहीं कर पाए। ठीक है, जितने पुराने लोग हैं वो कर लिए, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो टाइम निकाल के आइए, क्योंकि एक केस का जो आपने जो मेडिसिन पे इंडिकेट किया है उसका भी थोड़ा डिटेल अगर मिल जाता है कि वाई सल्फर में वाई फैंटेनिज्म, जो रूब्रिक आपने लिया था फैंटेनिज्म में क्यों लिया था, वो भी एक एक्सप्लेनेशन कई लोगों को समझ नहीं आया, वो भी समझ में आया। तो थैंक यू सो मच वानखेड़े सर। हम लोग आपको कहे कि आपको धन्यवाद करें और आप अगली बार आएंगे एक बार जोरदार तालियों। एक विनती करूंगा कि छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी संघर्ष कर रही है, इस संघर्ष को हमको पार पाना होगा। इसके लिए हमको प्रयास करना होगा, हमको कई मोर्चे पर लड़ना होगा। केवल नॉलेज बढ़ाने से नहीं काम चलेगा भाई, है ना। कोई अफसर बन जाता है और अपने कमरे में ही काम करता है तो उससे संसार नहीं चलता, उससे सरकार नहीं चलती है। आपको मोर्चे पे भी आना पड़ता है। युद्ध जीतना है तो कई लड़ाई जाना चाहिए, कई हथियार जानना होगा, कई तरीका अपनाना पड़ता है ना। युद्ध सैनिक को रसद पीछे पहुंचाने वाला होना चाहिए, नहीं तो हथियार लेके निकल गया, पीछे से कोई रसद नहीं दे रहा है तो वो युद्ध नहीं जीत सकता, जिससे ठाप हो जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के कुछ करना होगा। करना क्या होगा, हम लोग को अलग अलग मोर्चे पे लड़ना होगा। कैसे लड़ सकते हैं, हमको नेताओं को, मतलब सरकार में जो बैठे हैं नेताओं को बताना होगा, क्योंकि वही नियमों कानूनों को हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे, है ना, सुगम करेंगे। तो हमको किसी न किसी तरीके से हमको उनको अपने बीच में लाना होगा, उनको बताना होगा। दूसरा ये करना होगा कि हम जितने भी हमारे शुभचिंतक है, मतलब होम्योपैथी के फॉलोअर्स है, जो पेशेंट है, हमसे जो अच्छे हुए हैं, जो हमको मानते हैं, उनके माध्यम से आप आज की डेट में ट्वीट करिए। नरेंद्र मोदी जी सुनने को तैयार है, आयुष मंत्रालय उन्होंने खोला है, इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम सरकार के और नुमाइंदों को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उनको हम किसी न किसी माध्यम से
सूचना दे, उनके माध्यम से, जनता के माध्यम से आना चाहिए। जनता डिमांड कर रही है होम्योपैथी की, ये हमको अवेयरनेस लाना होगा। इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करना होगा। हम लोग ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, हमारे पास में कम से कम 10% तो निकाल सकते हैं ऐसे, जो अपने ईमेल से, अपने ट्वीट से उनको ट्वीट कर सकते हैं। तो हम लोग एक अभियान निकालना पड़ेगा और उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको उकसाना पड़ेगा, उससे माध्यम से करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो जनता का अवेयरनेस जाएगा, पब्लिक का जब अवेयरनेस जाएगा तो वो हमारी बात सुनेंगे और यहाँ पे कुछ न कुछ प्रयास होगा। कॉलेजेस सुनेंगे, डिस्पेंसरी जनरेशन है वो आपको फॉलो करना शुरू करेगी, नहीं तो हम लोग सिंक होने जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे, है ना। मुश्किल से ये जो पीढ़ी चलेगी, उसके बाद में अगर ये स्थिति रही तो अभी ये कॉलेज भी बहुत मुश्किल से फाइट करता है। जो बचा हुआ कॉलेज है कोर्ट जा जाकर परमिशन लेके आता है कि नहीं? परमिशन लाता है, जिस दिन कोर्ट को परमिशन नहीं मिलेगी वो उस दिन बंद हो जाएगा और हमको फिर यहाँ पे होमोपैथी खत्म हो जाएगी। और हमारे को ऐसे ऐसे कड़े कड़े नियम लगाए जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं। एक हमारे यहाँ से कचरा एक चिट्ठी का कचरा नहीं निकलता, फिर भी हमारे पास मंथली 2000 रुपया जुर्माना जैसे देना पड़ रहा है। उसके सिवा दुनिया भर के नियम कानून है। क्लिनिक होना चाहिए तो 2 स्तर पे होना चाहिए, उसके बाद में आपको फायर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिर आपको टॉयलेट होना चाहिए,